Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to continue our session on issue of share capital, and today we will cover the reissue of forfeited shares. So we will try to understand the conceptual understanding, we'll look into the journal entries. So we will discuss in both the language, Hindi and English. So I hope you people able to understand what is a relevance and importance of understanding the theory in case of going to the towards the roadmap of numericals. सो आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करेंगे, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और जर्नल एंट्रीज को भी समझेंगे। हमें ये विश्वास है कि अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि न्यूमेरिकल के पेपर्स के लिए आपको थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। आधी जर्नी तो वैसे ही पार हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपने लास्ट सेशन में जो फॉरफिटेड शेयर्स पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था उसे आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन में या और चीज़ें इंट्रोडक्शन में नहीं लगागे, हम फटाफट चलते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, दैट मीन्स अ शेयर विच यू फील्ड, okay, and which you have already paid, because you failed some point but you have paid something. Whatever you have paid something, I take it from you and I keep it in my pocket. I forfeited, I being a board of directors of the company, and now after taking from you I keep it into my pocket, that is I forfeited those shares. Now I decided to sell it to somewhere, I want to reissue. So that is a reissue of forfeited shares. Okay, now whatever amount the company will like receive on those reissue of forfeited shares, that now you know, being a continue member, you become a defaulting member. So whatever amount being the company is receiving on the reissue of shares, along with whatever I forfeited from you, from your side, that should not be increasing the face value. That means that should be within or equal to the face value. Okay, so the reissue can be in any form. Okay, reissue. So first you have to explain the meaning. So you have to connect the dot of reissue with the forfeited shares. Okay, and the job done by the board of director on behalf of the company. You can also give the example. Okay, so let's see, these can be reissued. The shares can be reissued. Okay, these can be reissued at par, reissued at par, at premium, and at discount. Okay, because this is a second issue, a reissue to the other party. So what is the situation, what we'll do in case when the shares are forfeited and it will be reissued at par? So in this case, whatever we have learned in the at the time of forfeiture, so whatever the entire amount standing into the share forfeiture account, what we have forfeited from you, whatever you have paid, I forfeit it and keep it into my pocket. Because if you forget the basic understanding of forfeiture, what I found is students get confused with the forfeiture and call scenario. I don't want you people to be into that dilemma. That's why I don't want you to memorize the thing. I want you to understand the thing. So whatever the amount standing to the book, to the books of share forfeiture, into my pocket, okay, whatever amount is will be our net gain. We will treat it as a net gain because now I decided to reissue at par. Okay, so whatever I took from you being a company and from you as a defaulting shareholder, you not being a defaulting shareholder but as a defaulting shareholder, it will become now net gain, and this gain will be the part of capital reserve and this will be transferred to the capital reserve. Hope it's clear. So I decided to reissue. So when I decided to reissue, I issue to somebody else. I give them, okay, go take this issue. Another word, somebody else is maybe interested and get these shares. So what they will do? They will give me a money, paisa. So to me means a company. So what I receive? Paisa, money. So bank account debit to against. Now it will again stand up a share capital. Why? Because I reissue those shares. Hope you are getting. Please never ever try to memorize these things. Okay. So at par, first we will deal with at par. So at time of reissue. Reissue means second time issue. I am issuing the shares to the public again. So I receive the money, bank account
debit to share capital account. I hope you people understood and able to recall why I did the bank account as a debit, why I did to share capital account as a credit. Please never ever think to memorize with me. Okay, so what amount we will receive? Whatever amount I, being a company, received on reissue, whatever be the reissue amount. So whatever be the number of shares I decided to reissue, at what price I will reissue, whatever amount I receive will be the part of this. So I can just write a brief ending: amount receive on reissue. Clear? Okay, so it can be number of shares reissue at the value of reissue. Hope it's clear. Now I told you that we are issuing at par. So whatever I am received, whatever I forfeited from your pocket, that will be my profit. My means a company's profit, and that need to be transferred to the capital reserve account. No issues. Okay. So now what I decided, that to transfer these share forfeited, whatever I share forfeited, okay, transfer to CR account. I'm writing shortcut. Please never dare to do it in the examination. Write full as a capital reserve amount or account. Sorry. Okay. So while forfeiture, what you did, share capital account debit to calls and arrear to share forfeiture. Hope you can recall with the last session. Now it's a profit, and now I decided to transfer it to the capital reserve account. So we have to close this, na, because I decided to reissue these shares. So say forfeiture to capital reserve account. Okay, whatever the forfeited amount, okay, forfeited amount, that will be transferred to the capital reserve. I hope you people able to understand each and every journal entry. So kindly give me a moment to quickly recall in the other language. ठीक है, आपने हमने जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमने शेयर को फॉरफीट किया. किसे फॉरफीट करते? जो आपने ऑलरेडी हमें पे किया था उसे हमने फॉरफीट कर लिया, अपने जेब में रख लिया. हमने किसने? कंपनी ने. कई बार ना स्टूडेंट, जब मैं पेपर चेक करती हूँ तो नेक्स्ट मैनी टाइम ये दिखता है स्टूडेंट कंफ्यूज ही हो गया था कि भाई ये फॉरफीट क्या किया था. कॉल्स एंड एरर और फॉरफीचर में मिस्टेक हो जाती है. क्यों? क्योंकि रट के बैठते, याद करते. याद नहीं करना है, अंडरस्टैंड करो. बार बार बोल रही हूँ फॉरफीट क्या करूँगी? जो तुमने ऑलरेडी दे दिया है, जो तुमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी. और कॉल्स एंड अरेयर, नाम बोल रहा है अरेयर, अरेयर जो आपने अरेयर कर दिया है, ठीक है, फेल्ड कर दिया है, वो अरेयर है. ठीक है, तो जो आपने ऑलरेडी पे किया था उसे मैंने फॉरफीट कर दिया. अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी और को बाहर रीइशू करूंगी, सेकंड पार्टी को सोल्ड आउट करूंगी. अब सोल्ड किया, ठीक है, मैंने बाहर पार्टी को डिसाइड किया कि अब मुझे बेचना है. तो जो भी मेरे को ना अमाउंट रीइशू करने पे मिलेगा, प्लस जो मैंने ऑलरेडी आपकी जेब से ले लिए थे पैसे, ये दोनों मिला करके फेस वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये रूल है. ठीक है, अब हम जो रीइशू करते हैं वो 3 पे कर सकते हैं. पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमने शेयर्स को डिसाइड किया कि हमें इसे रीइशू करना है और जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसे रीइशू पार पे करना है, यानी जैसे फॉरफिट किए थे उतने पे ही उसे जो है रीइशू कर देना है. तब जितना भी अमाउंट हमारे शेयर फॉरफीचर में खड़ा था ना, जब हमने जनरल एंट्री पास की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड अरेयर टू शेयर फॉरफीचर, एक बेसिक एंट्री. ठीक है, तो जो भी फॉरफीचर में खड़ा था वो सारे अमाउंट को हम अपना मुनाफा मान लेंगे. क्यों? क्योंकि पार पे ही इशू कर दे रहे हैं. तो जो मैंने जब्त कर लिया वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना, मेरा कंपनी का. तो वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. ठीक है, तो अब भाई मैंने री इशू किया है आज नए शेयर होल्डर को, तो क्या आ रहा है? पैसा आएगा ना, मेरे पास पैसा आएगा. अब पैसा आया तो अब आपने जो नए शेयर होल्डर बन रहे हैं उनको वो मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा. क्लियर है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्लियर है? याद नहीं करेंगे, सारी चीजों को समझना है. तो क्या अमाउंट आएगी? जो भी अमाउंट हमने रीइशू पे इशू की, रिसीव की, टोटल अमाउंट, यानी रीइशू जितने भी शेयर हो रहे हैं और जिस भी वैल्यू पे हो रहे हैं, टोटल वैल्यू आपकी इसमें आ जानी है. कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है. आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसे के मामले में बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग. ओके, सो अब मैंने बोला कि भाई मैंने बाहर पे इशू कर दिया. अब जो आपसे फॉरफिट किया था ना मैंने पुराने वाले शेयर होल्डर से, वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि अब तो रेशो फिर से पार पे ही कर रहे हैं. तो वो जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और आप बिल्कुल आराम से इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि क्यों डेबिट है शेयर फॉरफीचर और क्यों क्रेडिट है शेयर आपका कैपिटल रिजर्व. क्लियर है?
Okay, so I hope you people able to gather the information and understood about the when the reissue shares are at par. So now we go with the next situation when uh, we reissue the forfeited shares at premium. Reissue forfeited shares at premium. Okay, now I decided to issue more than what means I'll actually forfeited. So now I decided to reissue these shares at premium, and whatever the premium we will receive, again we need to credit to the security premium account. So in this case, what is standing, whatever amount is standing into a share forfeited amount will be treated as again as a net gain and transferred to the capital reserve. But now again I will do reissue. Okay, reissue क्या what will receive पैसा, I'll receive पैसा on reissue and to share capital to security premium. Hope you people totally satisfied with this entry. I don't want you to people memorize anything. So bank account debit, okay, to share capital account to securities premium accounts. So bank with the whatever amount I received on reissue. Okay, share capital, your nominal value or paid up value. Okay, same as nominal value or paid up value, and here the premium amount. Okay, with the reissue shares. Okay, and whatever amount standing to a share forfeiture will be transferred to the capital reserve. So transfer entry, I'm just writing the transfer entry. So share forfeiture account debit to capital reserve account. So whatever amount forfeited were reissued, okay, so with the forfeited amount, those whatever amount is reissued, this share forfeited amount will be transferred to the capital reserve account. So there may be arise situations when part of the shares are forfeited and forfeited shares are reissued, not whole the forfeited shares. Suppose I in our last session example, we have 100 shares which we have forfeited. Okay, but I reissue 50 shares, or can say 70 shares, I decided 75 shares to reissue. Not all shares I forfeited decided to reissue, but partial. So in that case, proportionate amount, whatever be the net gain on shares on that particular reissues, net need to be transferred to the capital reserve account, and whatever the remaining amount, the balance amount which is standing to the account of forfeited shares which is not reissued, okay, that must be left itself with the share forfeited. Suppose in this case either 50 or complete 75, whatever is reissue, okay, will be transferred to the capital reserve, and what we left not reissue will be left behind. Okay, so what is the disclosure requirement in the balance sheet? So we already discussed at the time of forfeiture that if you don't reissue, we will add to the your paid up capital. Okay, so when there is a reissue, so we have to disclose as addition to the paid up share capital again in the balance sheet. Okay, okay, I'll discuss then. One second. Liabilities. Okay, liability side, and we'll paid up share capital. Okay, so there may be a situation then in case of a oversubscription or pro rata allotment, then it will be proportionately will be done. So that will be I will explain you with the help of questions while doing the numerical. Okay, and this is only the things I need to explain here. So kindly give me a moment to conclude in other language. अब नेक्स्ट टाइम जो है हम शेयर्स को जो फॉरफीट कर रहे हैं उसे जो री इशू करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे. ठीक है, तो जब हम शेयर्स को री इशू कर रहे हैं तो री इशू फिर से क्या आ रहा है, जेब में पैसा आ रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम सेम. अब तो इतना आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ चीजें आपके इनहेरेंटली निकल के आनी चाहिए कि ये जनरल एंट्री होगी मैम. ठीक है, तो अगर ये चीज हो रहा है तो मीन्स वी बोथ आर ऑन द सेफ जोन. वी बोथ कैसे, आपको चीजें समझ में आ रही हैं. ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम.
होते, और ट्रांसफर कर देंगे हमने शेयर फॉर फीचर को अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो जो भी हमारा जो फॉरफीट किया था और री इशू कर रहे हैं, तो जो फॉरफीटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कई बार क्या होता है कि हमने 100 शेयर तो फॉरफीट किए थे, लेकिन कुछ 50 या 75 शेयर ही री इशू किए, तो जितने ही री इशू होंगे ना, वही हमारा प्रॉफिट का पार्ट होगा, ठीक है। तो उतने ही पोर्शन हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, और बाकी जो बैलेंस रह जाता है ना, उसे हम छोड़ देंगे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में ही, ठीक है। उसे हम जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब जितना आपका जो कंपनी ने री इशू किया है, केवल उतना ही पोर्शन जो है आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, और अगर नहीं किया है री इशू, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैंने आपको डिस्क्लोज की कि भाई हम कैसे जो है शेयर फॉरफीचर और शेयर जो है री इशू की जनरल एंट्रीज को हमने समझा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझा है, ठीक है। ज़्यादा और कुछ डिटेल इसमें डिस्कशन नहीं है। हम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट और प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट के केस में जो उसका ट्रीटमेंट है, हम फिगर्स एंड न्यूमेरिकल्स के साथ इसे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड इन वेरी डिटेल अबाउट ऑल द कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज so far related to the share forfeiture and reissue. It's my request to understand these things, because when we are going to deal with the numbers, so if you memorize the things, it will be hurdle, and you keep on recalling kya hoga kya nahi hoga. I don't want that. I want you people to took the things as an understanding, think like a company, and execute accordingly, okay. So in case of any doubt, feel free to ask. See you in the next session, more on commerce and accountancy. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.